अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? वी होप आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है जी कॉक्सिस बाजार अ जर्नी टू द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बीच। यस। और जेसन की वीडियो है सिलहट देख लिया, राजशाही देखा, मॉडर्न ढाका देखा बिल्कुल। और अब बारी है कॉक्सिस बाजार की। ये डेफिनेटली कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो अभी तक हम नहीं देख पाए। चलते हैं, जल्दी से वीडियो को देखते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चलिए इससे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हम हैं आपके रिएक्टिंग नेबर्स। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। Hello from Cox's Bazar, Bangladesh, the longest natural sea beach in the world. अब तो विजुअल्स होंगे। I'm staying here at Mermaid Beach Resort, where I was 6 years ago. It has changed a bit since then, as has Cox's Bazar. A lot of development has happened since 2018. I'm going to spend the late afternoon and early evening here walking along the beach and going for a swim as the sun sets. So this here is my beach hut. Outside shower and coconut trees. Outside shower. And if we go into the room, large, comfy and soft double bed, fridge, TV, Hi-fi है, the washroom, toilet, bathtub, very good, Bath. very good. and of course So both sides. the best part, stepping out to the back अरे and a वाह, pool view देखो आगे. in front of Bible my sitting room, room. connecting to the other Yeah. rooms, and views of the beach just a stone's throw away. The longest beach in the world. And the gentle swaying of the trees, a very laid back atmosphere. So if you're interested in staying in a beach hut like this, then the link for Mermaid Beach Resort is in the video description. There are a variety of rooms here at the resort. One of the highlights being the sleeping boat room, which when the tide is much closer to the resort later in the year, it feels like you're sleeping on a boat, as the name goes. Everything in the resort is made of recycled material. There are all sorts of creative ways that things have been built here, whether it's bamboo or old, rusted tin cans, wood from abandoned ships in Chittagong and along the coast of Bangladesh on the Bay of Bengal. Hello. And we're approaching the restaurant over here, which has a lot of great food that I've been lucky enough to try since arriving. This is where breakfast is served. The longest swimming pool in Cox's Bazar, 300 meters. Juice bar where you can chill and relax. So stepping out from the resort behind me onto the longest uninterrupted sea beach in the world, 120 kilometers or 75 miles. And the tide is very far out. After this section of water, the real tide is in the distance. My GoPro probably doesn't even show it that much. I have Mittelbai with me. How are you finding it here? Yeah, enjoying, both of us having some relaxing time together. The resort was quite nice also. They're keeping us good and giving priority to everything what we need.
अच्छा अब देखो कि ये भी एक नॉलेज की बात Hello. है कि हर बंदा आपको अपनी जगह के Football बारे में game on नहीं the beach बताता। here. बहुत बड़ी बात ये है। इंटरेस्ट की बात है कि जितनी इंफॉर्मेशन जितना आप पढ़ते हो अपनी चीज़ों के बारे Just में heading to नॉलेज check उतना out बढ़ता है। some of these हाँ boats. What do you call them in Bangladesh? They're not dhows here. They are called shampan or the moon boats. Hmm. And they're usually traditionally used by fishermen. Yeah, they are traditionally used by fishermen. They can be used for different cases. Salam alaikum. So here is a champan up close. Champan, yes. One, yes. Yeah. Your country? England. हमें बांग्लादेश। Oh, अच्छा, अच्छा। Yeah, yeah. Oh, अच्छा, अच्छा। It is stuck here, I guess, until the tide comes, as are the others on the beach further up, या with हमारा बे more groups of kids playing football. The sun almost disappearing now, beneath the horizon like a big red disc. Those men there, locals, just going for a stroll at the sunset hour. Tomorrow we will head further up the beach and check out some different areas away from the resort, which is just over there, and also head into Cox's Bazar town too. जिस रिजॉर्ट में ये थे आप देखो कि हर कोई वहाँ नहीं आता होगा इसलिए वो बहुत पीसफुल आपको नजर आ रहा है ना वही भी पॉसिबिलिटी कि एक्सपेंसिव हो। Welcome back. It is now the next day and we have made our way up the coastline to the center of Cox's Bazar town. We're going to check out the vibe and head to the main beach, public beach. There are actually a few, I think 3, but we'll go to the most central one here. Souvenir shops selling clothes, sandals, swimming shorts and bags. Where many locals come for a break, to be able to swim, to go on holiday. Mosque there, and this is the entrance to the beach. Snacks, sweets, kind of a mix of many things. Stepping on here to Shugonda Beach, and I am amazed at how many people you'll find along the coastline. It's right in the middle of the day, very hot at the moment, but that doesn't stop people here. They're not really afraid of the sun. Different vendors and things. Guava. So Mermaid Beach Resort is that way, about 20 minutes in a rickshaw south. It's nice and breezy, the waves are looking good. Lots of locals enjoying themselves. It's kind of like a festival type of atmosphere. This man selling bananas. Lots of vendors passing by with different things. And jet skis for hire. Lots of people riding them in the distance there. Although it is very sunny and a hot time of day, and there are lots of people swimming, most people are still wearing t-shirts and tops and long shorts even, which is more of a cultural thing than anything else. So regardless of where you're staying, whether it is in Mermaid or another resort in Cox's Bazar or even in the town, checking out this beach or one of the main beaches next to the center of Cox's Bazar is worth it, just to
people watch and get the idea of what the real beach experience is like for many locals here in Bangladesh. It's not like Mermaid Resort. This is where the masses come to enjoy their time, and so if you're interested just to get a glimpse of that, or even go for a swim yourself on this very large open part of the beach, then you can, but just bear in mind that you shouldn't really wear a bikini if you're a woman, or be too exposed if you're a man either. Just साफ आपको कचरा नहीं नजर आता शीशे की तरह So a rickshaw journey from Cox's Bazar town on the main public beach there, and we are by this wooded area that I also visited 6 years ago. A large span of open space here with less people, showing the natural beauty of Cox's Bazar once again. There are some areas here to go paragliding. Immediately it gets quite hilly, and Myanmar is over that way. One thing I probably should touch upon is the Rohingya refugee crisis, because that's something that internationally Cox's Bazar became more known for in the last decade. One of the largest refugee camps in the world, and many of the refugees, I believe, are on an island now, and there's been quite a lot of tension between Bangladesh and Myanmar in recent years. The Myanmar government are not receiving any of the Rohingyas. They're not really welcome there anymore, and the Bangladeshis are struggling to know what to do with them without any international support. It's difficult to relocate those vast numbers of people. It's a bit of an issue that seems to have been kind of a stalemate for a while, a non-starter. Bigger forces in the world are not intervening on this issue, and so it's left to NGOs to try and pick up the pieces for the moment and keep the people fed, give them somewhere to live. And the money has not been coming in as much as it was a few years ago because of other conflicts and things around the world, such as Gaza and Ukraine and in the Congo, and of course the list goes on. But that doesn't mean the Rohingya crisis has gone away. In fact, it is still here, and something I thought I should mention. However, it's safe to visit Cox's Bazar. You'll still see lots of people coming on their holidays, locals and some international tourists too, staying at the resorts. So you can still come here, it's still safe. So now back here at Mermaid Beach Resort, and look at this view in front of me here. The boat and the sunset right there. This is the scene. Tide far out now, further down the beach here. In paradise. Here are the other rooms, as I said before, connected to the private pool. The nice cold water here. And this may well be an appropriate place to finish this video. And the link for Mermaid Beach Resort is in the video description if you're interested in staying here for a couple of days to cap off your Bangladesh trip if you make a visit here. Peace.
वेरी नाइस वीडियो। यकीन करें, मेरा ख्याल है हमने दूसरी या तीसरी वीडियो देखी है कॉक्सेस बाजार के ऊपर, बिल्कुल। लेकिन इस तरह की चीजें हमें नहीं दिखाई गई। उसका रीजन है, उसका क्या रीजन है कि जो लोकल नेटिव्स आते हैं ना वहाँ पे विजिट करने के लिए, दिखाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, वो आपको सिर्फ बीच साइड दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यहाँ पे ये ऐसा है, है। यहाँ पे वो है, आपको खाना पीना मिल सकता है। मोस्टली पब्लिक लेकिन बीच को आके एक्सप्लोर Facilities करते हैं। बता वो देते आपने हैं देख लिया क्या-क्या ना कि जहाँ पे ज्यादा लोग आ रहे हैं वो सिटी के ज्यादा करीब है, जी। इजीली लोग वहां पे आते हैं, एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हमें ये नजर आया कि भाई जिस तरह से आप लोगों ने हमें कमेंट्स में बताया था कि यहाँ पे 5 स्टार होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, बड़े बेहतरीन लग्जूरियस रिजॉर्ट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, वो हमने यहाँ पे देखे। बिल्कुल, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है ना कि इंटरनेशनल टूरिस्ट जो भी होते हैं उन्होंने वन टाइम एक्सपीरियंस हाँ। करने आना होता है, तो वो उस चीज को अवेल करते हैं, वो मॉडर्न लग्जरीज को अवेल करते हैं। बिल्कुल और वो ऐसा ही चीज है। हमने इस वीडियो में देखी। बिल्कुल इसी तरह से, और जो रिजॉर्ट दिखाया है क्या ही खूबसूरत रिजॉर्ट था। मतलब आप देखिए उसका रूम ही इतना ज्यादा लग्जूरियस और हाँ। खूबसूरत, उसके अलावा जो बाहर सिटिंग एरिया था वो बहुत ज्यादा खूबसूरत था। हालांकि उन्होंने बताया कि सब कुछ रिसाइकिल या इको फ्रेंडली मटेरियल से बिल्कुल बनाया ऐसा ही। गया है अच्छा, यहाँ वो पे। मुझे वैसा आइडिया बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने Lamps। लैंप्स बनाए हुए थे या रूम्स डिजाइन किए हुए थे। कहीं पे विलेज वाइब आ रही थी तो कहीं पे एक ना एंटीक वाइब आ रही थी हाँ, आपको आती है, उसको बिल्कुल देख आ रही के। है। और वो देखो ना ज़ारा, वीडियो देखते हुए भी मैं जैद से ये बात कर रही थी कि जितना मर्जी आप कंस्ट्रक्शन कर लो, मॉडर्न हो जाओ, जी डेवलपमेंट्स की गई हैं, लेकिन आप देखो कि इंसान रिलैक्स होने के लिए नेचर में वापस नेचर में आता है। वापस वो जाता है, चीज सूट बिल्कुल। करती ना आपको। हाँ, बिल्कुल इसी ह्यूमन को तरह से। जरूरत है उस चीज, क्योंकि हमारे असल तो वही है। बिल्कुल। हम लोग बिल्कुल। स्टार्ट तो वहां से अच्छा, वो किया। बड़ा अच्छा लग रहा है। रिजॉर्ट जो है वो सराउंडेड था टोटली कोकोनट ट्रीज के साथ, हाँ, और बिल्कुल हाँ, सामने हाँ। आपको जो है ना वो और मुझे तो बीच वो मिल रहा जो है। है स्विमिंग पूल बड़ा अच्छा लग रहा था कि सामने आपको पूरा एक बीच का व्यू मिल रहा है और साथ आप जो है वो स्विमिंग पूल के बिल्कुल अंदर। है, बिल्कुल हर ऐसा ही चीज है। की फैसिलिटी थी। अच्छा, फिर हम अगर उनके बुफे की बात कर लें, क्या वो कुछ नहीं था। ग्रैंड मतलब मैं buffet। यहाँ एक पे बात वास्ट करती रेंज हूँ, थी। फूड तो आपको नजर आ रहा है ना, सारा हेल्दी और फ्रेश फूड आपको वहां पे मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आप देखो कि जिस तरह से उनको प्रेजेंट किया गया है वो सारी चीजें कितनी हाँ, खूबसूरत है। उसकी डेकोरेशन फूड की बहुत ज्यादा अच्छी की हुई बहुत थी ज्यादा उन्होंने। अच्छी थी। अच्छा, आई विश के थोड़े से ग्लिम्स ही सही हमें रिजॉर्ट के नाइट के भी दिखा देते ना, तो बहुत वो ज्यादा तो खूबसूरत हार्डली लगता दिखाया, लेकिन ना। खैर वो जो भाई क्रैब वगैरह बना हुआ था या हाँ। वो एक जो नाव हमें नजर आ रही थी हाँ, वो बहुत हाँ, ज्यादा बहुत प्यारा अच्छी लग लग रहा रही था। थी। अच्छा, हाँ। दूसरी चीज आप देखो, इस वीडियो में हमने एक नहीं, हमने 3 से 4 बीच देखे। एक तो रिजॉर्ट का हो 3 गया, बीचेस इसके देखे, अलावा हाँ। हमने एक और क्रैब भी बीच देखे। था और हाँ, एक पब्लिक वो बीच था। पब्लिक पब्लिक बीच बीच जो था, था। बिल्कुल इसी तरह से है। लेकिन जाते जाते आप ये देखो कि थोड़ी सी सिटी की वाइब भी दिखाई कि वहाँ पे जो मार्केट्स बनी हुई हैं, वहाँ पे जिस तरह से स्टॉल्स लगे हुए हैं, फूड है, शॉपिंग कर सकते हैं आप, गारमेंट्स तो है ही है, लेकिन हमें यहाँ पे ना, हम आपस में वही डिस्कस कर रहे थे, ज्वेलरी शॉप्स काफी कम नजर आ रही हैं। अच्छा, उसकी एक वजह ये भी है कि बीच पे टाइम स्पेंड करने के लिए जो जो नेसेसिटीज है ना वो उन्होंने वो वहाँ पे आपको रखी सारा हैं। कुछ वहां वो पर ऐसे मिल ही, रहा है हाँ ना। जी। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत खूबसूरत वीडियो है, और इसीलिए हम मल्टीपल टाइम्स एक ही चीज के ऊपर, एक ही टॉपिक के ऊपर वीडियोस देखना पसंद करते क्योंकि हैं। डिफरेंट ब्लॉगर्स का शूट करने का तरीका टोटली तरीका डिफरेंट होता है। हमें बहुत कुछ नया पता चल जाता है। बिल्कुल इसी तरह से। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।